So, hi guys, can you hear me? Am I audible? Like, can anyone give me a hint that okay, I am audible? Hi. Okay. So let me start if I am audible. So this year, as you guys know, that we had almost like very terrible year 2020. So now this year, almost all of you must be very enthusiastic कि हाँ पिछला year तो जो भी था जैसा भी था इस year we want to start something doing something productive uh, although like last year पूरा lockdown में चला गया but this year what we want to do is we want to do something productive that after the end of 2021 we will be confident in ourselves कि हाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी दे आर लाइक इफ दे आर एमिंग to participate in a competitive programming contest or if they are right now third year or fourth year student and they are aiming placement in a very good company or so they almost have wasted their last year because the college were not offline like their online semesters और peer group इतना अच्छा नहीं like peer group से disconnect हो गए और कई सारे reasons की वजह से जिन जिन लोगों ने उन्हें लगता है कि 2020 जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ बट इस 2021 दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश और वो चाहते हैं कि हाँ यहाँ से तो एटलीस्ट यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव साइड पे ले जा सकूं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ जितना जितना टाइम वेस्ट किया है वो मैं अब यहाँ से फुलफिल कर सकूं तो उनके लिए लाइक कोडशेफ की तरफ से एक अनाउंसमेंट है दैट वी आर starting a batch basically a year long batch for all those who are enthusiastic and who are looking forward to do something productive in this 2021. So before going to the batch details, let me introduce myself. My name is Deepak Kumar Gour. I am 2020 graduate in computer science and engineering and आई एम एन आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट सो जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें लाइक पता होगा कि आईसीपीसी इज लाइक इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एंड इट्स also known as the Olympics of coding. So I am gonna share my screen. Basically, I will give you a brief about the batches in let's say 10 to 15 minutes. Then you can ask me some doubts, and then uh, I will, you can feel free to ask any doubt regarding to the batches or any other things that you want to ask and anything that you are facing right now, any problem that you are facing right now to start your journey. So this year, this course is basically dedicated to someone जिन्हें अभी कोडिंग का बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है उन्हें इवन उन्होंने कभी अपने आप से एक प्रोग्राम लिख के कंपाइल भी नहीं किया है उन लोगों से स्टार्ट करके एक वेल सेटल्ड या फिर वेल सेटल्ड स्टेट जहां पे पहुंच के वो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं जहां पे पहुंच के वो रिकॉग्नाइज फील कर सकते हैं अपने आप को सीपी कम्युनिटी में या फिर वो एम कर रहे हैं इंटरव्यूज या फिर वो अपने कॉलेज के करिकुलम में ही अच्छा करना चाह रहे हैं लाइक डीएसए के जो सब्जेक्ट्स हैं या अपार्ट फ्रॉम डीएसए के सब्जेक्ट्स जो बाकी की चीजें हैं लाइक देयर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग वाली चीजें हैं वो करना चाहते हैं तो उन सब के लिए लाइक दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट्स की किस तरह तुम्हें एल्गोरिथम सोचनी है वहां से लेके कैसे स्टार्ट करना है एक प्रो तक पहुंचने के लिए विद इन अ ईयर तो basically let me start ki what we are going to provide. This batch will start from today onwards and what we are going to provide in this batch. So the name of the batch is Conquest 2021. It's basically dedicated batches for beginners and intermediate. There are 3 parallel batches in this regular batch. तो 3 पैरेलल बैचेस चलेंगे कई लोगों को लगता है कि हाँ हमें पाइथन सीखनी चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो एमिंग फॉर डेटा साइंस एंड ऑल कई लोगों को लगता है कि हाँ सीपीवी में करना चाहिए या लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स की वजह से जिन जिनको लगता है कि हाँ हमारे कॉलेज में फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सी प्लस जावा में सिखाई जाती है तो बेसिकली वी हैव 3 parallel batches, one in C++, one in Java, and one in Python. So you will be learning all the data structure and algorithm in 3 parallel batches in their own comfortable language. And after that, we have an intermediate batch, like for all those people who are a little bit familiar with the competitive programming, but want to learn with a little bit more pace, then they can also try the intermediate course. So what we are going to offer in this, there is a structured learning for complete beginners and intermediate to become expert level coders. Like structured learning means basically most of the time we waste almost 50 to 60% of our time in finding problems and basically we learn some stuff 2-3 days we learn a lot of things but after that we take a break and end up doing nothing in a very long term. So basically in this course हम यहाँ पे MWF में structure classes लेंगे like consistently classes होंगी. You will have डाउट सेशंस जहाँ पे तुम सैटरडे और संडे को अपने डाउट्स पूछ सकते हो एक डेडिकेटेड सर्वर रहेगा जहाँ पे तुम अपने पीयर ग्रुप्स
पीयर लोगों से सीख सकते हो, अपने पीयर से डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इवन देयर विल बी अ टॉप नोच टीचिंग असिस्टेंट जो तुम्हारी हेल्प करेंगे डाउट सॉल्व करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव वीकली कॉन्टेस्ट, वीकली बाई वीकली कॉन्टेस्ट, जहाँ पे तुम परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट अबाउट द इंस्ट्रक्टर्स, जिस पे लाइक आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट दैट ये कोर्स तुम्हें अच्छे से सिखाएगा। एंड द थिंग इज, the reason of my confidence is the kind of instructors we are going to provide you. All the instructors are almost ICPC world finalist, either IOI medalist or Code Forces grandmasters or international grandmasters. This course is basically like one end-to-end solution if you are looking for uh, competitive programming, ICPC, IOI, if you are a school student aiming for IOI, or if you are a second, third year student aiming for interview preparation like internship interviews or job interviews. After completion of this course, you will get a code chef certification. This code chef certification is basically इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोडशेफ सर्टिफिकेशन। यहाँ पे तुम अपने रेज्यूमे में डाल के फ्लॉन्ट कर सकते हो अपनी सीपी स्किल्स, बिकॉज कोडशेफ रेटिंग्स एंड कोड फोर्सेस रेटिंग आर लाइक नॉट दैट रिलायबल, बिकॉज कोई और भी तुम्हारी जगह कॉन्टेस्ट दे सकता है। देयर आर वेरी लॉट ऑफ थिंग्स, बट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू विल गेट अ कोडशेफ सर्टिफिकेशन. There are three fundamental pillars of these course. The first is doubt support. Your doubts will be resolved by teaching assistants, and teaching assistants will not be like just another guy. They will be 6-star or 7-star coders from CodeChef, masters or international master from Code Forces. We will have live interactive classes, and these live interactive classes will be Monday, Wednesday, Friday live interactive classes, and after that Saturday and Sunday there will be doubt clearing sessions from the TAs and sometime from the instructors. There is a dedicated practice relevant problems. For example, if you ask me that how many problem I have solved to reach to a level where I can feel confident for the interviews or for CP contest, so I will tell you a huge number, let's say 5,000 or 6,000. But if someone asks me, is it really necessary to solve such number of problem to achieve the same level, I will definitely say no, because I can easily summarize all these problems in almost 400 to 500 problem, जहाँ पे तुम उन 400 500 problem को solve करके same level gain कर सकते हो, and that we will try to do here. So after that, what you are going to learn in the entire 1 year, you can see that it's like 53 weeks program. तो इसमें क्या सीखोगे? स्टार्टिंग के कुछ weeks you will be taught introduction to programming with the help of flowcharts and all. After that, you will be like taught introduction to programming in C++, Python and Java. तो तीन पैरेलल ट्रैक होंगे जहाँ पे तुम C++, Python, Java अपनी फेवरेट लैंग्वेज में सीख सकते हो. आफ्टर दैट जो लोग पाइथन और जावा में सीखे हुए हैं उनके लिए अगर वो मूव करना चाहते हैं सी प्लस प्लस में, तो उनके लिए वी विल हैव अ ब्रिज कोर्स जहाँ पे जो सेम कॉन्सेप्ट उन्हें सी प्लस प्लस में एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर करा के from this point of onward they can continue their journey in C++. Apart from that, if they want to continue in Python and Java, they are feel free to do that. So after that, we will have a like lot of classes on sorting and searching, and then basic data structure like linked list, text, queues, and almost binary search trees, AVL trees, and almost every data structure that you can think of. Then we will have additional concepts in Python and C++ like object-oriented programming and smart pointers, let's say references, and बाकी की चीजें जो लैंग्वेज स्पेसिफिक तुमसे पूछी जा सकती है इंटरव्यूज एक्सेट्रा में. देन वी विल हैव अ ग्रीडी एल्गोरिथम with classical problem solving, and then we will data structure 2. In data structure 2, like advanced data structure, for example segment tree, square root decomposition, disjoint set union, etc. After that we will have a number theory, discrete log like baby step, giant step, and there are so many discrete log algorithm number theory algorithms. After that you will have a separate 4 to 5 week on recursion and dynamic programming, and this is only the introduction of dynamic programming here, जहाँ पे तुम classical problem, one dimensional, two dimensional, three dimensional DP, DP with bit masking, digit DP, ये सब सीखोगे. Then we will have a 4 to 5 week on discrete mathematics, जहाँ पे boolean algebra, two sets, some introduction to graph algorithms, ये सब सीखोगे. Then in the graph algorithm section we will have let's say graph coloring, short all pair shortest path, Dijkstra, Wellman Ford, and Prames, Kruskal, or almost everything that you can think of. After that, we will have a dedicated 2-3 weeks in segment trees where you will be learn normal segment tree with lazy propagation, dynamic segment tree, persistent segment tree. Then जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो recursion and DP था, this is only for the basic and intermediate level. But अगर कोई बहुत ही अच्छा कर रहा है, let's say he is aiming a good rank in ICPC, और let's say वो world finals टाइप की चीजें एम कर रहा है, तो additional dynamic programming, advanced dynamic programming like DP optimizations, Noth optimization, and Noth optimization, convex track, and so on and so forth.
after that like computational geometry like these are the topics जो कि तुम्हें ऐसे लोग पढ़ा रहे होंगे like advanced dynamic programming and computational geometry. You will be taught these particular topics from someone who is actively solving such kind of problems in live context. For example, someone who is international grandmaster, or let's say among the top 2 top 3 coders of India. तो इस तरह के so you can feel free like you can be confident कि हाँ कोई ऐसे नहीं कि कोई पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहा है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स. यू कैन सी कि तुम्हें लग रहा होगा वैसे कि 4-4 5-5 वीक में एक एक टॉपिक को दिया है, तो यू कैन अज्यूम कि कितनी डेप्थ तक जाने वाले हैं, इसीलिए इतना टाइम दिया गया है. और 3 क्लासेस अ वीक, 2 आवर्स पर क्लास, so 6 hours a week and 52 classes, so almost like three more than 300 hours. So now comes to the educator stuff. Who will be teaching you? So here are the some of the names like Tanuj. He is like 2 times ICPC World Finalist and worked at Google, Facebook, and there are like a lot of guys like Pulkit. He is international master at Code Forces. Then Triveni, he is also 2 times World Finalist and won like multiple contests and ICPC regional judge at IIT Kanpur site. This is me. Here is Ria. He is like a Google Women Tech Maker Scholar of 2018 and currently working at Flipkart and LinkedIn, like Google Summer of Code at Harvard University. So these are the kind of instructor you will be uh, getting here. After that, like there are like few more names. Nishchay Manwani, he is like one of the highest rated coder at Code Forces, international grandmaster, and a few weeks back he was the highest rated at Code Forces. Himanshu Singh, he was like the winner of TCC this year. He was the winner of Code Gladiators of this year and TCC of 2019. And there is a Vivek Chauhan who is like a 6-star coder at 7-star coder in fact at Code Forces and India rank 6 Code Forces master and Southern Asia runner of this year. So these are so now the batches that you will be getting here, the Conquest 2021. This is the batch program from programming fundamental to career readiness in C++. I and Ria will take this, and this like for the Python language with Ria and Sanket will take this, and in the Java uh, Sanket and Ria will take this. So these are the combination that you can see. And this the course that I was talking about from intermediate to advanced level, Pulkit will take this course. So it's not like that Pulkit only will take this course or Ria and I will only be taking this course. So ये initial अभी जो courses अभी add हुए हैं इसमें. After that जैसे जैसे topic add होते जाएंगे, you will see a lot of educators जो कि आएंगे स्पेसिफिक, जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक में जो एक्सपर्टीज फील करता है कि ओके जैसे मैं अपनी टीम में डीपी संभालता था, तो हाँ डीपी में लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इनफ to teach the dynamic programming, so I will teach that. And if there are some topic, let's say I am not that confident in number theory, I can solve problem, but in the teaching side I am not that confident, so we will bring someone who is extremely good in the number theory itself. Okay, so this is like the teaching support chat forum. So there you can ask your doubt. This will be exclusively provided to you. Apart from that, we have a dedicated Discord server. जहाँ पे specific courses की specific channel में तुम लोग doubt पूछ सकते हो, peer to peer interaction कर सकते हो. This is like a course wise practice problem. तो जैसे मैंने बताया था कि 4000 to 5000 प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सेम लेवल पे पहुंचने के लिए. अगर एक समराइज वे में तुम्हें लाइक 1/10 प्रॉब्लम में भी सेम गोल अचीव कर सकते हो, तो उसके लिए those selected problem will be here provided to you for practice and for contest. So yes, now the subscription part, if you are aiming, so uh, first glance में तुम्हें लग सकता है कि लोगों को that the fees is a bit more, but if you divide it with the like the kind of material you will be getting, then it's almost 90 rupees per day. So you can use my code if you want to avail additional 10% discount. And yes, so this is all about the things that you will be getting, are the set of the topics that you will be learning. तो किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो वो मेरे से पूछ सकता है. हाँ तो वन डाउट इज देयर. शुभम इज आस्किंग व्हाट इज दिस अबाउट, इज इट फॉर बिगिनर्स? तो शुभम बेसिकली it will the target audience is someone who is aiming from beginner to advanced. तो हाँ स्टार्टिंग के जो जैसे तुम देखा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी आज तक एक वर्ड भी कोड नहीं किया है. और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिक अप्रोच करना आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट उन्हें कोड लिखना नहीं आता. तो स्टार्टिंग के लेट से 8 वीक लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी उन्हें कि वो उसके बाद लैंग्वेज एक बैरियर ना हो. उसके बाद फ्रॉम शॉर्टिंग एंड सर्चिंग यू कैन अज्यूम कि हाँ यहाँ से इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हो जाता है अप टिल ग्राफ थ्योरी. देन यहाँ से फिर तुम देखोगे कि ये एडवांस लेवल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है.
Is it also beneficial for IOI aspirants? Yes, definitely. If you are aiming for IOI, so these are all the topics which will be very helpful for you in IOI also. Like I have seen the topics and kind of problems that have been asked in IOI. तो IOI का सिलेबस मोर और लेस सेम होता है आईसीपीसी के सिलेबस से. कुछ चीजें एडिशनल होती हैं आईसीपीसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारी चीजें तुम स्किप कर सकते हो. कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की क्वेश्चंस लास्ट 3 to 4 ईयर में मैंने नहीं देखे आईओआई में आते हुए, तो कुछ कुछ चीजें तुम स्किप कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीजें ऑलमोस्ट दिस इज लाइक अ सुपर सेट ऑफ द प्रॉब्लम्स that you will face in IOI. What can we expect from this course? If you are following this course very sincerely, and if you are solving each and every homework and assignment problems that are given to you, if you are performing regularly in the context that are given to you, you can easily like aim much higher than what you have asked, Rishabh. Like the 5-star coder, you can easily aim higher than this. So the cost is very nominal for the 12 months. If you with the per day fees, then it will be less than 100 rupees per day. So you are getting a 2 hour class and problem like doubt session and selected curated problems in less than 100 rupees a day. Then I think it's kind of nominal. ओके, यू कैन विजिट द कोर्स लिंक, जो कि इस लिंक्डइन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में, या फिर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पे तुम लोग कोर्स प्लान के बारे में देख सकते हो. सो दीज आर ऋषभ, इफ फॉर ऑल दोज गाइज जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो लास्ट के 4 मॉड्यूल्स अगर वो हटा दें और स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स अगर वो हटा दें, तो बीच का पूरा सेक्शन इंटरव्यू प्रिपरेशन उनकी डेफिनेटली कवर करवा देगा. You can take a month subscription in the middle of the course. Yes, definitely you can take a month subscription in the middle of the course. Apart from that, one more thing for you guys. Like ऐसा नहीं है कि ये कोर्स का सब्सक्रिप्शन से तुम्हें केवल यही कोर्स मिलेगा. अगर तुम ये कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, तो साथ में पैरेलली इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. यू कैन easily take all the classes of this course, and apart from that जो additional concepts है like crash course for interview preparation, पैरेलली जैसे इंटरव्यूज का टाइम आएगा जब कॉलेज में, तो क्रैश कोर्स होंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के, तो तुम वो भी देख सकते हो. इट्स लाइक नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो तुम बाकी की चीजें भी इजीली एक्सेस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि अभी बहुत बेसिक चल रहा है, तो तुम बाकी की चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो तुम दूसरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो पैरेलली. तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हें नंबर थ्योरी में बहुत मजा आया और तुम नंबर थ्योरी में लाइक एक्सपर्टीज लेना चाहते हो, और इस कोर्स के अलावा भी तुम रिलेवेंट प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो यू कैन इजिली enroll in the course that is dedicated to number theory only. Aman, is this course enough for ICPC and Google Code Jam? So for your क्वेश्चन अमन, सो बेसिकली इस कोर्स को बनाते टाइम हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो हमें आता है और इस कोर्स में ना हो. और जब इस कोर्स को बना रहे थे, तो मोस्ट लाइक 6 to 7 people एंड ऑलमोस्ट 5 of them वर ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट. So you can assume that yes, if you are practicing enough, then it's enough. But if you are not practicing enough, then nothing is enough. Okay, so I think anyone want to ask anything else? No, it will never be like that. That course आने बंद होगा. It's complete 1 year dedicated batch. Uh, See, if at the end everything boils down to the how much practice and how much efforts you are putting. But if अगर एक dedicated path अगर हो, तो उस पे एफर्ट डालना इजी होता है. एक डेडिकेटेड पाथ जहाँ पे तुम इजीली अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पा रहे हो, इजीली एक वेल क्यूरेटेड प्रॉब्लम सेट जिसमें तुम लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम से सेम एफर्ट्स लिमिटेड नंबर ऑफ एफर्ट्स लगा के सेम रिजल्ट देख पा रहे हो, देन आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. व्हाट एडवाइस फॉर द फर्स्ट ईयर? एडवाइस फॉर द फर्स्ट ईयर इज, जितना तुम जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है. लाइक आई स्टार्टेड इन माय सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स. तो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट करने का फायदा ये हुआ था कि फोर्थ सेमेस्टर तक वी आर टीम इज एट सच अ पोजीशन दैट वी वर श्योर दैट ओके, रीजनल्स तो हो ही जाएगा, लेट्स एम फॉर समथिंग बिगर, लेट्स एम फॉर वर्ल्ड finals. I will be taking the C++ course.
If you are stuck in short contest and you are doing performing good in long challenges, that means कि तुम time constraint के साथ perform नहीं कर पा रहे हो. All you need to do is virtual contest दो codeship पे, code forces पे, codeship पे. After that एक restriction time की restriction लगा के practice करो और हर कॉन्टेस्ट के बाद अब सॉल्व करो. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया आज के कॉन्टेस्ट में, देन ट्राई टू डू द 4th प्रॉब्लम विद इन द नेक्स्ट 1 डे. Is there any other batch after 8th of January? There is one more batch which is starting from 11. But I think if you are starting from 8th of January, 8th of January से flow charts वगैरह basics of programming पढ़ाए जाएंगे. So if you are like an intermediate level of coder or something, then you can start from 11 too. For final year folks, this is a year long program. So final year folks के लिए I think you can join the intermediate course, because this course will be very basic. Like the starting portion will be very basic for you. After that the course is very relevant to you. But if you do not want to waste your time in the starting portion, then you can definitely start with the intermediate course, intermediate batch. Okay, so I think that's it from my side. Happy coding. So you can visit the course link and see the description. So you can see the description and you can see the content that will be provided. You can like easily, even you can ping there, that if you find that there is some topic or something is missing, then you can type there and we will definitely add it to the course. Okay, bye.